एक ना एक रहेगी. So this is the software. This is the software, VMware Workstation. Can you see? Yeah. No one can see. तो ना हो गया. ये क्या आ रहा है? VA क्या है? मुझे नहीं पता. Everyone can see, correct? Okay. So this is how you will see when you first install your VMware Workstation. Okay. Not these things. It's created now, but it will be blank. This is your type 2 hypervisor. With the help of this, you can virtualize your system. So first thing first, what you need to do is, before doing this, you need to check whether your BIOS virtualization technology is enabled or not. To check, what you need to do, you need to just create a sample VM over here and try to run. If it runs, then it's enabled. If it is not running, you will encounter one error. Say Intel VT technology is not enabled in your BIOS. Okay. So how to create VM? I will show. Then you check. To create a VM, here you can see create a new virtual machine, correct? Click on create new virtual machine. Next thing you will see typical and custom, correct? थोड़ा zoom करें या ऐसे चल रहा है. हाँ. That's why I'm asking. सब बोल के देना पड़ेगा तभी होगा ना. बोलना चाहिए जूम करना है मुझे यहीं से मुझे मेरे को दिख नहीं रहे. Now clear. More zoom. Now it's okay. और zoom कर देंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे. Okay, you can see typical and custom, correct? It's written, two options are given there, typical and custom. Go with typical, recommended. No need to go to custom. Custom में you can customize almost everything. हर छोटा छोटा चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो. बट नाउ उतना जरूरत नहीं है, जितना उतना ही काफी. Typical. Next. Here it will ask three types of installer. Install from disk, image file, or install later. Install later. You need to go with the install later. उसी में चल रहा है सर वर्कस्टेशन. कौन सा क्या? उसी लैपटॉप में चल रहा है. हाँ. ये सर्वर में चल रहा है. वही सर रिमोट एक्सेस कहाँ इसलिए सर्वर में चल रहा है. So you need to select. I will install later. Next. You can see guest operating system. That means what type, for which platform you want to install. So we need to install what? Microsoft Windows OS, but server OS. We need to install what? Server OS. Yes, Microsoft Windows. So here the platform is there, Linux, VMware, others, a lot of things is there. So we are installing Microsoft only, correct? So we need to select the Microsoft and version
10, 8, 7, Vista, these all are client operating system. Server 2008, 12, 16, 3, 2000, these are server OS. So just install 12 करो 16 करो कुछ भी करो वो there is no difference. So we'll do 16 because there is one topic that is called Hyper-V. So the 2012 ISO which I have here, there some few components are missing. For that Hyper-V cannot be installed. That doesn't mean that in 2012 you can't install Hyper-V. You can install, just you need to take a good ISO file. So for that we are going to take 2016 so that we don't have to install again and again. Next, assign name, whatever name you want to give your wish. Let's say I'm giving DC01. Next, location, where you want to put your files, in D drive, C drive, E drive, where? So in my server, in their server, here VM partition is there. So I will keep inside this VM partition, but not directly. I will just create one folder. Inside that folder I will keep. So let's say MCSA 10 batch DC01. फोन में अच्छा दिख रहा है सर Now clear? So even we have to give location as the DM. Directory, it's your wish. If you want to give if you want to give Mine is off. Speaker off. It off. Speaker. hello. हाँ, ठीक है. So here in location you need to specify where you want to keep your VM. Like you can't create VM, you can keep all the VMs in just like that, right? So you should keep it precisely. Give name, what name you have that server, this one VM is, inside that you keep it. Because there are a lot of files are there. It can be messed up, correct? So that's why in my scenario, I want to keep in D drive inside MCSA 10 folder. Inside that folder, I have created one more folder that is called DC01. So inside that, this VM files will be stored. The next maximum size recommended is 60 GB. 60 GB enough. That's enough. But if you want more, 100 GB, 200 GB, whatever, you can assign. But depends on your capacity. Physical hardware capacity. Don't give like 1 TB hard drive, you are giving here 3 TB. It will not do. Then next, there is two options you can see. Store virtual disk as a single file and one is multiple files, correct? Go with a single file only. ज़्यादा फाइल बना के रखोगे, it will be risky. If anything happens in any other file, सारे के सारे VM चला जाएंगे. Better keep it in one file. Finish. Next, this is a review. What you have selected. Here you need to go with the customized hardware. Here you need to go with the customized hardware. Now can you see all the specification? Memory, processor, DVD, network adapter, USB, sound card, printer, display. Printer तो है नहीं, वो छोड़ो. Display. Sorry. So under memory, as per your system specification. 4 MB देगा सर वो 4 MB देगा. हाँ, लेकिन चलेगा नहीं. 4 MB मतलब वो क्या बोलते हैं, एक OS आता है, चिप लेवल OS बोलते हैं उसको. वो फॉर दोस काइंड ऑफ टेस्टिंग 4 MB लेते हैं. ये SOC पता है? SOC मोबाइल पे जो स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी, ये सब है ना, दोज आर SOC.
टू टेस्ट एसओसी सॉफ्टवेयर वो 4 MB भी चलता है टेस्टिंग में, तो उसके लिए ये दिया गया, बट नो नीड टू गो सो मच. Here I am getting 64 GB maximum recommended memory. Why? Because I have 128 GB of RAM in server. If you have 8 GB, you will not get 64. You have to give below 8 GB. Direct सीधा 8 GB बंद मार देना, तो सिस्टम ब्लैंक, कुछ नहीं होगा. So here I have, it's showing 2 GB means it's recommended memory. By default it's take 2 GB. But if I have 64 GB of expandable thing, so I will just give to 16 GB. That's it. ऐसे लैपटॉप में दे पाएंगे? How much GB you have to give, sir? Your system. Your wish, as per your system. Minimum how much? Minimum 2 GB for your systems, normal laptops. This is server, so I am carrying 16 GB because 64 GB is expandable is there. In our systems, it will show only like 7 GB. If it is 16 GB memory, then you will get only 15 GB like that. कम मिलेगा. I have 128 GB, so I am getting 64 GB. So 16 GB I am giving. Processor always one core. 2-3 core वैसे करने मत जाओ, ठीक है? No matter how much core you have. Xeon में बहुत सारे हैं, लेकिन 16 cores है, एक ही देना है VMware, because VMware doesn't support so many cores. 8 core काफी है, 2 core max. Next, now in a blank system, we need what to install OS? To install operating system in a blank machine, what we need? USB drive or CD. USB drive or CD drive, bootable, correct? VM में कैसे करेंगे? VM में कोई ऑप्शन नहीं है. But when we create bootable devices, we need one software, that is ISO file. Correct? ISO file is required to create bootable USB or CD DVD. Correct? That ISO image I need to attach it over here. How? Can you see use CD DVD SATA? Down you can see use ISO image file. Here I need to assign operating system image file. Operating system image file. ISO files. Browse. यहाँ से कोई भी जो भी ये चाहिए. So we need what? Server 2016. So down you can see Windows Server 2016 data center emulation. This is an ISO image file, power ISO file. That means this is an operating system which is an image file. So I need to select this. Then close. बस finish. काम हो गया. So you can see one machine is created with 16 GB RAM, processor 1 GB, hard disk 60 GB. ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग फिजिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? This when it comes over the network, when you do these things over the network, उसको बोलते हैं cloud. Simple short definition. ठीक है? काम करते हैं यहाँ पे एक और एक हुआ है. तीन MCSA चल रहा है, एक मॉर्निंग, एक 3:30, एक 10. सबको एक टाइम नहीं कर सकते? कोई बात ले सकते हैं. एक टाइम पे दो क्लोज करके एक टाइम पे डाल दो. इसी टाइम में? सबको ही अपना ही टाइम चाहिए. दूसरे टाइम में जाना ही नहीं है मतलब. So now power on.
इंस्टेंटली ऑन हो जाएगा सर, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होगा। सर जूम आउट कर दो सर, आधा आधा दिख रहा है। Installation part you know only. Same how you install this one client, same way you have to install server also. There's no difference. कितना रील्स देखोगे? सर रील्स नहीं सर, स्टोरी था। So Wi-Fi which to connect sir यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं ऑन कर सकते ना, हॉटस्पॉट ले लो। नहीं ऑन हो रहा है यहाँ पे। आज का दिन पर्सनल ले लो। earlier Ashwini was there no, sir. बट अश्विनी's लैपटॉप ना, दिस इज अ जुगाड़ वाला लैपटॉप, so that's why it cannot be done. So can you see here 4 options are there. रुको फिर से जूम करते हैं आगे। Four options are available. Windows Server 26 is standard evaluation, one is standard evaluation desktop experience. एक है डेटा सेट evaluation, one more is data set evaluation desktop experience. अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या हुआ? इसमें जूम इन नहीं करता, कनेक्शन ही चला गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा सेंटर कोर एंड डेटा सेंटर डेस्कटॉप, और स्टैंडर्ड कोर और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। ये एक क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर आता है लेकिन आता है। Two types of server is there, one is CLI and one is GUI. CLI and GUI, GUI. graphical user interface. जैसे लिनक्स में we can see this, क्या बोलते हैं इसको, hey GUI, we can see the GUI, correct, but still we have to do all the things in command line. When you see in real time जो configuration वगैरह होते हैं, you will not see that GUI, you will see only black screen CLI, there only you have to do, कोई GUI कुछ नहीं है। There will be IP @ your name @ your IP, वो CLI mode, and same CLI mode you can get it
from server. If you are good enough in command line, PowerShell, shell scripting, you are most welcome to CLI. If you are not good enough, stick to GUI. ये आपको डिसाइड करना है कहाँ जाना है. If you opt for CLI also, मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं उस लाइन में हूँ ही, क्योंकि मेरे से कमांड ना हो पाए. तो GUI. Okay, 2 options is there. अभी how you will identify which one is CLI and which one is GUI? वहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा होगा and with standard either it will be written desktop or it will be written supported GUI, or it will in description it will be written it is only for GUI based configuration. That means what, no matter what you do, select, check the description first. Is there, it is written GUI supported, or it is written no, there is no GUI. You have to see and do it. Because कभी कभार क्या होता है, हम लोग नहीं पढ़ के डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते. And if it turns out to be CLI, आपको फिर से फॉर्मेट करके GUI करना होता है. And most of the company doesn't give also. Once CLI done, you have to do it because formatting server is prohibited. डायरेक्ट फॉर्मेट करना, डायरेक्ट आपको अलाउ कर कोई नहीं करेगा. So whatever you are going to install क्या बोलते हैं, देख के कि what you are installing. If by mistake you have installed CLI, you have to work on CLI only. So इसलिए ये है थोड़ा देखना होता है. और ये इसको क्या हो गया, net is there. ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you नहीं है, सर्वर ही डिस्टार्ट हो गया. सर्वर का थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं. तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है. देन क्या बोलते हैं, सर्वर स्टैंडर्ड और सर्वर डेटा सेंटर, देयर इज a difference. You know what is the difference of Windows 10 Home and Windows 10 Pro? Do you know difference? Don't know. What is the difference between Windows 7 Starter and Windows 7 Ultimate? सभी फीचर अनलॉक नहीं होते सर, नॉर्मल. It depends on the feature. इससे सोचने वाली कुछ नहीं है. Windows 10 Home you will get less features. Windows 10 Pro, that is professional, you will get more features. Same with the case with Windows 7 also. If it is Windows 7 Starter, that means you will get very very less features. If you are installing Windows 10 Ultimate, you will get all features which is available. So that is the thing. It depends on the features. That's why these versions are created. So in server, you need to install data center always. Data center with GUI supported. तो ये कहाँ पे पढ़ना है आपको मैं दिखाता हूँ.
In this ISO you will get 4 options. Maybe in other ISO you will not get so much of description also. तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ के देख के करना. But it will not like that. There will be nothing is written for GUI. It will be written, but you need to see where, how, what is written. Even if it is description, it is not written also. Near to the Windows data center, it will be the GUI supported, desktop experience, those things. स्टैंडर्ड क्या होता है सर? डेटा सेंटर Standard normal है. नॉर्मल Normal. You will not get so much of feature on that. To get features, you need to install डेटा सेंटर. data center. देखो यहाँ पे when I go to Windows Server 26 in data center evaluation, in description you can see this option reduces management and servicing by installing only what is needed to run most server roles and applications. ठीक है? It does not include a GUI, but you can fully manage the server locally or remotely with Windows PowerShell. जैसे मैंने बोला. Now let's come to desktop experience. This option is useful when a GUI is required. तो थोड़ा पढ़ के खुद से समझ के करना है. ठीक है? अच्छे से समझा दिए. इसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे, if you install CLI again, पूछना नहीं मेरे को. Why this is coming? So then next. Accept. Next. Custom. यहाँ तक तो पता ही है. I have to explain this. Normal Windows installation. How you do? That's it. बस और कुछ नहीं है. So wait for 2 hours. Still not take 2 hours. 5 to 6 minutes. 10 minutes max. 10 minutes. क्या होगा? काहे खाए? काहे? क्यों? पता है तो क्यों खाए? और बताओ कैसा चल रहा है जिंदगी? So where to get this create virtual machine this one? Software? You have installed VMware. Okay, you provide, huh? कितना दिन लगेगा ठीक होने में? How much days it will take to recover? This one. Depends on weather. He's eating curry every day. That's why he's coughing. Correct, no? That's it, no? Avoid curd, no?
Not Farhan. एक होता है ना कि ये मेरा भी होता है, ऐसा नहीं है मेरा नहीं होता, मुझे हाई फीवर रहेगा, बुखार रहेगा, सर्दी रहेगा, और जैसे ही मैं ये क्या बोलते हैं आइसक्रीम देखता हूँ, बस कुछ भी हो जाए, जाऊँगा खाऊंगा मैं, फीवर, हाई फीवर, सर्दी हो, कोल्ड, डायरेक्ट जाके मारूंगा। उसके बाद घर जाके, मतलब पहले वही होता था, घर जाके मैं डांट मिलती थी, क्यों खाया, क्या है, तो मैं एक जस्ट बेकार का लॉजिक देता था। देयर इज वन फ्रेज, लोहा लोहे को काटता है, देयर इज वन फ्रेज लाइक मेटल कट्स, वही वैसे कुछ है, तो वही मैं बोलता था, ठंडे ठंडा ही ठंडे को काटेगा, because this fever, cold and cough happens because of cold only, right? If we have cold things only, then it will be recovered. उसने भी खाया। वाह, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದಾಗಿದೆ. Pretty last for us, didn't you? 9493 156 945. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಗೇಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಎಸ್ ಇಲ್ಲ చేస్తారా ఇప్పుడు అది ఉంటుంది రివర్స్ అది గ్లోబల్ ಸ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ there is type is if the that type is important that is current one అదే టైప్ అంతే ఇలా చెక్ చేయాలి ఏది చేయాలి అప్పుడు చేయాలి ఐసిఎంపి అయితే ఐసిఎంపి అయితే ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ 2.1 ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು 3.4 USD ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಅದೇ ಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ USD ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಯ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಐತೆ
HDMI selection. మళ్ళీ లోకల్ కింగ్ అయితే అవుతుంది మళ్ళీ కింగ్ అవుతుంది Blue కాకుండా జగన్ కింగ్ అయితే మంచిగా బోనస్ ఓన్లీ దాని గురించి చేసిన మళ్ళీ రాలే ఇల్లు మొత్తం ఈసీపీ ఆఫ్ అయిపోయింది I have one of the files. This 23 to 30. Other problems? 640. For 650 and you know, which your cost is? This represent communication. This నాదో ఒకే లేదు ప్రైవేట్ గ్లోబల్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ చేస్తాం తర్వాత అడ్జస్ట్ ఇస్తాం ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ తర్వాత ప్రాబ్లం చేస్తాం ఏం లేదు నాకు పిల్లలు అడుగుతారు ఎటువంటి బ్రో నాది దేవాయితు సర్వర్ వారికి సర్వర్ MCSA సర్వర్ తయారు ఎవరు యూజ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಐತಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ మా ఫైల్ వస్తుంది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది 60% అయింది 70-80 कहाँ हुए 100 कंप्लीट 100 completed अरे वाह सर्वर एडमिन बना गया बस थोड़ा सा ही दिक्कत है गेटिंग रेडी फॉर सिस्टम एडमिन और 5 मिनट्स में हो जाएगा इसका मतलब ही है गेटिंग रेडी का मतलब ही है गेटिंग रेडी फॉर सर्वर एडमिन तो हम लोग जैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं राइट वी यूज्ड टू इंस्टॉल विंडोज 10
So when we install Windows 10, we need to create username, then give password, right? That username is a local account, correct? Local user, normal. In server, you cannot create any user or something. You can see here username administrator, correct? Default. And it is default. You cannot change anything over here. So server always work with administrator, no other user. कोई और यूजर से काम नहीं हो, only administrator, that's it. उसका पासवर्ड दे दो, one special character and one number. Okay. So now अच्छा, एयरपोर्ट में ये क्या वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाने से होगा या आरटीसी पीसीआर वो टेस्ट करवाना है? सेकंड वन होगा, मतलब सेकेंड होने से ठीक है, अदरवाइज वी नीड टू टेस्ट एंड वी नीड टू गो. वो वैक्सीनेशन फर्स्ट से नहीं होगा. कहाँ जा रहा है? घर को जाएगा. 1 मंथ है, लेकिन ये सब सोच के रखना पड़ेगा पहले. फर्स्ट हो गया, सेकेंड डोज बाकी. मैं वो तो आसान कर दिया है. क्या बोलते हैं, भगवान ही जाने. It's installed, correct? Now you can see the screen is little bit small, correct? थोड़ा छोटा नहीं लग रहा स्क्रीन? फुल स्क्रीन नहीं होने वाला ये डायरेक्ट. To make it full screen, you need to do something here. अभी मुझे बताओ एक क्वेश्चन का जवाब. And plus, you know, networking, you know, CCNA, you know, correct? किसका A plus नहीं हुआ है? बाकी सबका हुआ? एक दिन में हुआ था, बाकी सबका तो हो गया है ना? Tell me what is kernel? Kernel. Kernel. आपका तो मैंने ही दिया था, फर्स्ट क्लास में मैंने लिखा था. बोलो kernel. What is kernel? KERNEL. Kernel. क्या होता है ये? बोलो. देख के बोल के फायदा नहीं, मुझे बिना देख के बहुत चाहिए. देख के देख लियो तो मैं यहाँ से ये एंगल में जाता है भाई, ये एंगल में दिखाई देता है. बोलो. टेल. It's a bridge between software and hardware. Software, whatever high level language software will send, kernel will translate it to low level language and it will transfer to hardware so that they can communicate each other. Now here VM we have created. VM is something external, correct? So this VM doesn't know what is the hardware specification because it cannot contact hardware directly.
So VM needs something so that it can communicate. Mediator. So what we need to install? Kernel we need to install here. And what kernel? How we will get that kernel? Just go up. This is the DC01 tab, correct? Can you see here? DC01 tab. इतना बड़ा हाथ वहां पे दिखाई दे रहा है और जूम चलो ठीक है जूम करते हैं रुको रुको ये रहा राइट क्लिक करना है आफ्टर राइट क्लिक कैन यू सी हियर इंस्टॉल VMware tools this is a kernel for virtual machines I need to install this in order to make contact with my physical machine if I don't install this it will work but there will be no contact with the physical machine so I need to install this so click on that and just wait for the pop-up एक pop-up आएगा यहाँ पे कहीं पे साइड में ये आया click on that pop-up run setup64.exe if by chance you miss this pop-up no worries go to file explorer this PC यहाँ पे भी है so just double click सर ये सिर्फ विंडोज सर्वर ओएस के साथ है या सभी सर्वर ओएस के साथ सब VMware पे चलाना पड़ेगा तो टूल्स ये विंडोज के लिए भी है कुछ लिनक्स के लिए भी होता है लिनक्स में भी इंस्टॉल करना होता है कभी कभार खुद से ले लेता है अगर नहीं लेता तो यू नीड टू इंस्टॉल इट थ्रू कमांड लेकिन ये चाहिए नाउ यू विल सी it will be in a full screen अबे जल्दी कहाँ गया रे हो ही गया होगा फुल स्क्रीन ये देखो हो गया previously it was small correct अभी देखो ये full हो गया why because VM got to know what is your screen resolution उसके बाद रिस्टार्ट कर दो you need to restart Windows 10 generation installation हो गया done now we will start how to set up server installation configure ये हो गया अभी now we will start setting up server main thing so first of all this is a server manager whatever you are going to do in first paper second paper third paper everything यहीं से करना है
UI. सर्वर मैनेजर। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले, एट लेफ्ट साइड यू कैन सी लोकल सर्वर, करेक्ट? क्लिक ऑन लोकल सर्वर। After clicking local server, can you see the properties, computer name, work group, firewall, remote management, those things? Now, here you need to do something. Now, first of all, computer name, what it is written, win-uiv something कुछ लिखा हुआ है, spell कर सकते हो इसको, pronounce कर सकते हो? Can you pronounce? No sir. नहीं, क्यों? क्यों नहीं कर सकते? Numeric भी है सर उसमें. Now, for just imagine if someone asks your server name, I need your server name, तो इसको बोलते बोलते वही बोर हो जाएगा, win-uiv क्या क्या है. So first rule, always assign readable name to your server. There should not be a non-readable. ये non-readable है ना, पढ़ नहीं सकते इसको. You should assign readable name. So क्या करना है? Click on this name. Then you will get to rename this computer or change this domain or work group. Click change, correct? दोस्तों change में click करना है. Now you can see the name, right? Change the name. दो जो देना है. This is one. ठीक है? Then click OK. Apply. जब ये रिस्टार्ट मांगेगा, डोंट रिस्टार्ट. रिस्टार्ट नाउ, लेटर. सर नेक्स्ट, ये अभी चेंज नहीं होगा, ये रिस्टार्ट होने के बाद चेंज होगा. Restart after this. नेक्स्ट थिंग व्हाट, विंडोज फायरवॉल शुड बी ऑफ. Firewall. हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस. दिमाग ही नहीं चलाते. फायरवॉल क्यों यूज करते हैं? फॉर प्रोटेक्शन, करेक्ट? Protection. फॉर आवर नेटवर्क. यहाँ हम लोग फायरवॉल ऑफ कर रहे हैं. दैट आल्सो इन सर्वर. व्हाई? विंडोज 10 में फायरवॉल ऑफ करते हैं, चलता है, बट सर्वर इज समथिंग वेयर प्रोटेक्शन शुड बी वेरी हाई, एंड हियर आई एम टर्निंग ऑफ फायरवॉल ऑन. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ये ऐसे ही क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं. नहीं, रीजन ये है, whatever the configuration we are going to do, whatever configuration, firewall will take those configuration as a threat, because there is no inbound or outbound rules set, and you don't have to create those inbound outbound rules. You just need to turn off the firewall, do all the configuration whatever is required. So according to the configuration, it will create all the firewall rules. Okay. After that, later you turn it off. And the practice on confidence play of the गूगल कौन है? गूगल, गूगल और गूगल. Kugan. वो गूगल है ना? Kugan. हाँ. गूगल सुन. Google. Google will pay for you. क्या है Google? Google. This week money is there or not? This week money is there or not? No.
Google college something. मैं भी शॉक हूँ गूगल कौन है गूगल He is a big Google. उसके बाद क्या है नाम समझ नहीं क्योंकि कीर्ति यू कॉल ना हाँ कीर्ति. इससे तो मैं सोच रहा हूँ गूगल कौन है यहाँ पे गूगल कीर्ति सुरेश. कीर्ति सुरेश तो गूगल कौन है क्यों है Google is a Sir, you don't know Kirti Suresh. He's an heroine, sir. कीर्ति सुरेश कौन है Heroine. He's naming him Kirti Suresh. Calling him our heroine. तो उसका असली नाम क्या है Google Kirti. हाँ कीर्ति is ladies promoter. है ऐसा भी है बाप रे लड़कियों का नाम रहता है बंदे है लेकिन किरण Madhu. मधु लोग क्यों बेचारे लोग कितना ट्रोल खाए होंगे स्कूल में ऐसा नाम नहीं लेना बेचारे लोग I'm Siddharth. People call me Sidhu. एक लड़की था स्कूल में सिंधु सिद्धू अच्छा मैच हो गया ना. मैच हो गया बढ़िया वाह ऐसा याद भी है मैच नहीं इधर फिल्म रोल चीपेस्ट नहीं है मैसेज तो फायरवॉल को ऑफ करना बंसी होती रानी हाँ लैपटॉप वीडियोस Which video, sir? See, I told her. एक सैंपल देखो सैंपल है ना एक्टिंग करना है बॉलीवुड में जाओगे नहीं सर नहीं है बॉलीवुड कोई ट्रोल हो रहा है हॉलीवुड में जाओगे दिखा दीजिए Today we have to practice. What practice? 1 minute video. I fight engine fight on the Hello, your name. You just tell what are you learning in what institute and who is teaching and what is the environment. बस खत्म. Okay, lowest model is where compared this is better. The basic one lowest. देखो. Fight में this is complete. Check. This is a sample. And the normal which अंके अंदर 500,000 on TV का रहने 500 This is to create. not like no one TV storage HDD How many? better 45. better SSD solid state रहेगा तो सिद्धार्थ कैसा कुछ नहीं बस नाम बुला रहे पीछे के 3 6 7 7 वीडियोस यू विल गेट sir I'm not the cleaned out ऐसे दो वीडियो अभी नहीं वो पूरा बढ़िया से इसके बाद Sai Krishna. समझे सैंपल मिला पीछे भी देख लीजिए एक बार आप भी देख लो एक बार बढ़िया MCSA देखने में जरूरत नहीं है ना सर. और लाइव नहीं चल रहा है ना अगर रंग आया तो फिर तो नहीं सकता है. और नॉट टू गाइस. ये डबल सर्कल है. आउट से तो नहीं. इधर ना इधर कीर्ति और कौन भी First glance से start होना. Oh, maybe.
feedback. Sir, feedback in video. Don't want too much of. Yes. Nothing for that. Right. Yeah. Just go for a normal. इतना लंबा चौड़ा वो जो होता है ना कुछ ऐड में होता है ना इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं उतना नहीं चाहिए After seeing the movie, this movie is very good. हाँ बस उतना लंबा नहीं चाहिए बस शॉर्ट खत्म 1 minute 1 minute max 50 seconds to 1 minute. 50 seconds 50 सेकंड भी हो सकता बस नाम बोलो ये बोलो खत्म हो गया Promote in Tamil, no problem. Tamil also. Wow. हमें नहीं इंग्लिश भी नहीं है Tamil Nadu people, they will come, sir. Can we multiple language Telugu also. English is the basic common language. Everyone understands. नहीं तो पूरा का सबके सब लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा सबको अपलोड करना पड़ेगा एक दो करोगे We have seen the Vishnu movie. How you will do it in Urdu, French, Yeah. Bengali, and all those things like that only. That's the thing Universal market. so इसलिए तो ये देख ले सैंपल पता चल गया कल तक if possible कल तक करके लाओ 2-3 times you try. Then finally, once if you are okay with it, then you can go for a final. You have to tell all the courses which we are on. no what you are doing See, this one, why I am giving you doing to take a video is, if you are going for a company, if you are doing a presentation, how will you? इसमें भी हेल्प करेगा because in that Skills so many business will be there persons and all will be there Will be there. ये तो छोटा मोटा है वहाँ पे तो वो इतना बड़े इसमें एक जगह में बैठ के करना है वो तो और भी खत्म then तो एक कॉन्फिडेंस आता है चलो हुआ है हाँ And take some 2 to 3 photos. चलो पोस्ट करो No, नॉर्मल you can normally, no need to see the क्लास कर रहे हैं इधर इधर ध्यान दो so firewall you need to turn off okay next thing what you need to do is बस लिखे बैठे तो भाई और हंसी तो server should obviously have IP addresses without IP address it will not work first of all so we need to assign now here is the main thing where you are going to create a network whatever networking you have learned giving the IPs all 3 of you remove your mask. Last bench. All 3, yeah. It's okay, no. कोई बात नहीं बढ़िया है चलो so you need IP address so how you can assign just click on here IPv4 address assigned by DHCP it's written correct click on that you will get Ethernet option correct go to properties here you can see Internet Protocol version 4 correct Yes, sir. IPv4 double click on IPv4 here you are going to assign IPs so let's take our server network address like 192.168.1.0/24 so what I will do 92 dot you need lights No, I want 3 people to stand here, carrying the bag and keeping the notebook in one hand. चलो मॉडल आ जाओ I don't have 3 of them. जिसके पास बैग है कॉपी लेके आ जाओ Click मॉडल on back, and then you can stand here. 3 of them. कितना लकी हो आप लोग हमारे टाइम में तो ये सब कुछ ही नहीं Come on, man. हम भी मॉडलिंग कर सकते थे ना Take the हाँ बुक के साथ करना है Yes, exactly. ये तो कहा जा रहा है One girl One girl, compulsory.
आ जाओ, कुछ नहीं होगा। बोर्ड थोड़ा बोल देते हाँ we can. here. What is the nothing? Just few seconds. That's it. Book is enough, right? Little bit you can come close. You can come in the center. Just a little bit closer. Right now. And you stand in the side. You also side. 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 Don't laugh. Photography is not easy. Now, ma'am, you come in the front, second and third, one next to other. Just stand this side. Where you can see this way. Thank you. You are always welcome. हो गया? चलो रख दो। Shooting हो गया सर. शूटिंग हो गया, फटाफट ये खत्म करते हैं। Right first time. So now you need to, what you need to do? You need to assign IPs, correct? तो IP assign कर दो, followed by subnet mask, then click OK. बस. Oh yes, one more thing. In this section, you need to uncheck Internet Protocol version 6. Don't forget this. Okay? IPv6 को uncheck कर देना. बस. Now just refresh. Here you can see the refresh local server is coming, right? Just refresh it once. उसके बाद restart. Done? उसके बाद अभी restart कर दो. पेन ड्राइव में देखो तो VMware और सॉफ्टवेयर वगैरह है कि If it's there, then copy everyone. तो यहाँ तक सबको करना है प्रैक्टिस. Create VM, install server, set it up, assign name, turn off firewall, assign IP address, restart. After that, configuration will start. ADDS, DNS, DHCP वगैरह वगैरह जो भी है. What are the softwares are there? Wait, मैं देख रहा हूँ. See here, computer name is there DC01, correct? Yes sir. Firewall till now off, Ethernet 1.1. तो यहाँ तक आपको करना है. Till here you need to do it. आप कहाँ पे करोगे?
नहीं करूँगा। आपको थर्सडे फ्राइडे बोला ना प्रैक्टिस सर्वर में जाके Game work oxygen pro okay is there. Windows Server 2012 is there. Okay, 2012 we will take it, do it. When Hyper-V we will do at that time. 2016. Copy this to software. ये VM में already installed है। You have it. So take this and आप copy कर लो. ये